Assalamu alaikum. On behalf of Sultan Muhammad Shah Aga Khan School Primary Section, I would like to extend my gratitude to the All Karachi Young Motivational Speakers team for having us and being here with us today and conducting the round 1 of this wonderful speech competition. It's truly inspiring to witness the effort and enthusiasm you have brought to our campus. Your dedication to organizing this event has provided our students with an incredible platform to showcase their talents, to express their ideas, and build their confidence. Competitions like these are not just the stage. They are stepping stones to developing essential life skills. They teach our children to communicate effectively, think critically, and present their thoughts with clarity and poise. Through such opportunities, our students not only grow as individuals, but also learn the importance of voicing their ideas to make a difference in the world. We deeply appreciate the time, energy, and passion you have invested and the children have invested in this initiative. Thank you for helping us inspire and empower the next generation of confidence and articulative speakers. We look forward to continue these collaborations in future and creating more opportunities for our students to shine. To all the little champions here, good luck and do your best. Thank you so much. Heartily thankful to the Aga Khan that they have provided and they believed on us, and they also provided such lovely children and their home ground to conduct this program with them. Now I would like to call upon our beloved member, that is our Corporate Deputy Director, Ma'am Shabi Fatima, to come and say a few words and motivate the children for their upcoming session. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everyone. It is an honor to address you at a school level round of All Karachi Young Motivational Speaker Gold Medal Competition. This competition reflects the vision of Pakistan Solutions to empower and inspire the youth to become a confident speaker and critical thinkers. Future leaders, we believe that the art of public speaking is not just a skill, but it's a tool for influencing positive change in our society. On behalf of Pakistan Solutions, I extend my heartfelt gratitude to the management of SMS Aga Khan School for providing us this wonderful platform. I would also like to thank our jury member for their presence. Dr. Sarwat Askari and Fatma Shiraz is not here right now. Finally, I wish the very best of all our participants. Remember, true victory lies in learning, growing, and inspiring others. Thank you so much. Now I would like to introduce our jury members, that is Dr. Sarwat Askari, and she's not only a doctor, she's also an Islamic scholar, a good researcher, and the another jury member is not right now here, she will be joining us very soon, that is Fatima Shiraz. She's the celebrity chef and also a podcast host. Okay, now we would like to begin our program. Let's your teachers join and then we will start the program as soon as possible. डर लग रहा है? थोड़ा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं. This is a platform. हम आपको ये प्लेटफॉर्म दे ही सीखे हैं ताकि आप आगे बढ़ें और बोलना सीखें, ठीक है ना. आपके टीचर्स ने, आपके मैनेजमेंट ने, आपके प्रिंसिपल्स ने आपके ऊपर मेहनत इसीलिए की है ताकि आपको आगे बढ़ने का हुनर मिले. कोई डिसहार्ट नहीं होकर जाएगा यहाँ से. हार और जीत हमारी जिंदगी का हिस्सा है. हम सब जीत भी नहीं सकते और हम सब हार भी नहीं सकते. One has to win and one has to lose. ऐसा ही है ना? That is the rule of the life. ठीक है? तो किसी को डिसहार्ट नहीं होना. For us, you all are winners. In our eyes, you all are winners. In your teacher's eyes, you all are winners. Right? So disheart किसी को भी नहीं होना. हार और जीत it's a part of life. जो हारता है ना वो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होता है और हम हार कर ही सीखते हैं. हम जब ज़्यादा हारते हैं ना तो ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाता है हमारा, ठीक है ना. और इसकी वजह से हम एक ना एक दिन ज़रूर जीत जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ से सीख कर जाना है. सबसे ज़्यादा ये सीखना है कि हमें अपने दिल की बात कैसे कहनी है किसी से.
صحیح ہے. آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ آپ اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. Got it? چلیے let's start the program. Okay. Now the categories which we are introducing today, that is the Future Star. We are starting from the first category, that is Future Star, and the first member of this category is Rubab Fatima Khan. I would like to call Rubab Fatima Khan to come on the dais and say a few words. I am Rubab Fatima Khan from Gurgaon. A warm good afternoon to all the respected teachers and judges. Today my topic of speech is about the teacher. A teacher is a person who plays a very important role in students' life. They are the pillars of a nation. They guide and shape the destiny of the students and teach them to become better human beings. Because a real teacher not only educates the students, but they also build up the whole personality of their students. A good teacher is like a beam of light in a student's life, which removes all the darkness, fears, and doubts from the pathway of success. Our teachers are the ones who bring out the best out of us and make us believe in ourselves. This is the reason that I like and love all of my teachers from pre-primary to primary classes. My teachers have always been a very good listener with effective communication skills. They have a respectful attitude towards us. Whenever I feel down in my class, my teachers make me learn with fun. Our teachers, sometimes they play with us and do activities with us. That's why they really take a big heart to shape little minds like us. Now, I will sum up my topic with a beautiful saying. The influence of a good teacher can never be erased and they live forever in the hearts they touch. Thank you. About telling you about your teachers and to highlight the importance of the teachers in front of us. Category is also a future star, and now I would like to call Zubaina Rahib. معزز اساتذہ، والدین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ والدین کے ساتھ دوستی ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے. والدین کی دوستی ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ ہماری خوشی میں شریک ہوتے ہیں. جب ہم اداس ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں. میرے والدین ہمیشہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتی ہوں اگر میں محنت کروں. والدین ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خوابوں کو بھی حقیقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب اسکول میں میرے نمبر اچھے آتے ہیں تو میرے والدین بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب اسکول میں میرے نمبر اچھے نہیں آتے تو میرے والدین مجھے سمجھاتے ہیں. میرے والدین ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. یہ مجھے آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے. ہم طلباء کے لیے والدین سے دوستی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ نہ صرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ہمارے سب سے بڑے مددگار بھی ہیں. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. میری دوست آمنہ اپنی امی کے ساتھ ان کے رشتے داروں کے گھر گئی. وہاں اور بھی بچے تھے. آمنہ نے ان کے ساتھ باہر جانے کی ضد کی. امی کے منع کرنے کے باوجود آمنہ باہر چلی گئی. وہاں ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر گئی. اسے بہت چوٹ لگی. اگر وہ اپنی امی کی بات مانتی تو ایسا نہ ہوتا. اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ والدین کے ساتھ دوستی اور ان کی بات مانی چاہیے. شکریہ. Thank you, Zubaina.
So telling us about the parents, आपने बहुत अच्छी बातें की अपने वालिदैन से दोस्ती करने के हवाले से कि हमें अपने वालिदैन से किस तरह से दोस्ती करनी चाहिए. बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वालिदैन हमें हर मकाम पर हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए. Now I would like to call Muqaddas to come on the dais and tell us something about the topic. Hello everyone, I am Muqaddas Arif. Today we are going to talk about the most amazing people in the world. Our teachers, they are like superheroes who help us learn, grow and shine. They guide us how to read, count and even color inside the lines. They help us make new friends and even make us feel better when we are sad. Just like how our parents take care of us at home, teachers take care at school. Can anyone tell me what their teacher's superpower is? That's right. Teachers are kind, patient, and always willing to help us. They are like superheroes. But instead of caps, they wear smile and hugs. Teachers have a special kind of magic. They can make numbers and letters appear on the board. And they can even make us understand things we didn't know before. It's like magic, right? But the best part is, teachers want us to learn and grow. They want us to become the best. A teacher is also a good organizer. They have to organize activities that take place in schools throughout the year. They have to take care of other little but important things like the sitting arrangement, classroom activities and more. They also supervise a lot of tasks and activities in school. For example, attendance, homework, behavior is also supervised by teachers. So next time when you see your teacher, give them a big smile and say, "Thank you for all the fun things they teach you. Thank you teachers, you are the best." अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ैरा बिन्त आहद, मैं जमात अव्वल की तलबा हूँ। आज मैं एक मौजू पर बात करने जा रही हूँ जो हम सबकी ज़िंदगी पर असर डाल रहा है, बच्चे और टेक्नोलॉजी। इस तेजी से बदलते हुए दौर में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक आला नहीं बल्कि हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम रोज देखते हैं कि बच्चे फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी एक ज़बरदस्त मददगार साबित हो सकती है। हमें इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतनी है। टेक्नोलॉजी एक दुधारी तलवार की तरह है। इसके एक तरह बहुत ही मजबूत चीज़ें हैं। आप सीख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने के लोगों के साथ राब्ता कर सकते हैं। वहाँ तालीमी एप्लीकेशंस हैं जो साइंस, रियाजी और ज़बान सीखने में मदद करती हैं और कहानियाँ हैं जो आपकी तफरीह को बढ़ा देती हैं। टेक्नोलॉजी आपको बड़े खाते में तेजी से सीखने और उन चीज़ों को दरियाफ्त करने में मदद दे सकती है जिन्हें आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन हमें होशियार रहना भी ज़रूरी है। स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर वक्त गुजार कभी कभी हमें ज़िंदगी, साथ और खुशियों को दूर कर सकता है। ये हमें खानदानी वक्त, बाहर खेलने, किताबों और हकीकी ताल्लुकात से दूर रख सकता है। जिंदगी स्क्रीन के बारे में नहीं बल्कि दोस्तों, पढ़ाई के लम्हात और कुदरत की खूबसूरती तजुर्बात के बारे में। आइए हम वादा करें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अक्लमंदी से करेंगे। इसको एक दोस्त बने जो हमारी तरक्की, सीखने और कामयाबी में मदद करे, ना कि कुछ ऐसा जो हमारे ख्वाबों, ताल्लुकात और सीखने के वक्त को छीन ले। याद रखें, थोड़ी स्क्रीन का वक्त ठीक है, लेकिन खेलना, किताबें पढ़ना और दुनिया का मुशाहिदा करना हमेशा अहम होना चाहिए। आइए हम वक्त का तवाज़ुन रखें, टेक्नोलॉजी को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ हम सीखें, पढ़ें और कामयाब हों। सिर्फ इस
स्क्रीन पर नहीं बल्कि हकीकत में और अपने दिलों में और जिंदगी में। शुक्रिया। क्या लिखूं आज माँ बाप की शान में, जिनकी अजमत लिखी रब ने कुरान में। रब्बे हम हुमा कमा रब्बायानी सगीरा, ऐ हमारे परवरदिगार इन पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला। जनाबे सदर, मोअज़्ज़िज़ टीचर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है वालिदैन से दोस्ती। जनाबे आली वकार, दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है और अगर ये रिश्ता माँ बाप के साथ हो तो इसका हुस्न और बढ़ जाता है। वालिदैन का बच्चों से एक खास रिश्ता होता है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। वालिदैन एक अजीम दोस्त और इन्वेस्टर हैं जो अपना वक्त, उम्र, पैसा और अपनी सोचो फिक्र सब हम पर कुर्बान कर देते हैं बिना किसी लालच के। किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ कलम रुक जा, अदब का मुकाम है, तेरी नोक के नीचे मेरे माँ बाप का नाम है। A famous Japanese proverb is, a father goodness is higher than the mountains and the mother goodness is deeper than the seas. वालिदैन से दोस्ती एक बेलौस मोहब्बत और खुलूस दिलजोई का हसीन शाहकार है। हमें अपने वालिदैन से दोस्ताना सलूक रखना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। वालिदैन की मौजूदगी एहसास बहार होती है, उनकी खिदमत से ही कश्ती पार होती है और उनकी रज़ा से ही सबकी किस्मत पायदार होती है। माँ जिंदगी की तारीख रातों में रोशनी है, बाप ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो पर तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाती है। जनाबे सदर, तमाम दुनियावी रिश्तों में सबसे बड़ा दर्जा वालिदैन का है। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के बाद वालिदैन की अताअत का हुक्म दिया गया है। आज मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे वालिदैन मेरे अव्वली दोस्त हैं। उनसे दोस्ती की सबसे बड़ी वजह उनका प्यार, उनकी मोहब्बत और जिंदगी के हर मैदान में उनका साथ। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की अताअत, खिदमत और एहतराम करने की तौफीक दे। आमीन। I will end my speech with the hadith of our holy prophet, peace be upon him. The pleasure of Allah is in the pleasure of parents and the anger of Allah is in the anger of parents. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है वालिदैन से दोस्ती। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा, वालिदैन और मेरे साथी तलबा, आज मैं वालिदैन के साथ दोस्ती के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये दोस्ती क्यों खास है? क्योंकि हमारे वालिदैन हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं और हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं। वालिदैन से दोस्ती हमारे लिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो हमें मोहब्बत और एतमाद देते हैं। जब हम गलती करते हैं तो वो हमें दुरुस्त रास्ता दिखाते हैं। जब हमें किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो हमें समझाते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं कोई मुश्किल सवाल नहीं समझ पाती तो मेरी अम्मी बहुत नरमी से मुझे सिखाती हैं। मेरे बाबा हमेशा मुझे कहते हैं, तुम हर मसले का हल निकाल सकती हो, बस कोशिश करो। इनकी बातें मुझे मजबूत बनाती हैं। वालिदैन हमारे ज़िंदगी के पहले उस्ताद होते हैं। वो हमें ज़िंदगी के अहम असूल सिखाते हैं जैसे कि ईमानदारी, एहतराम और दूसरों के साथ मेहरबानी करना। अगर वालिदैन हमारे दोस्त हों तो हम आसानी से इनसे सीख सकते हैं और अपनी मुश्किलात शेयर कर सकते हैं। तो आइए अपने वालिदैन को अपना बेहतरीन दोस्त बनाएं और हमेशा इनकी बातों को समझने की कोशिश करें। शुक्रिया। मेरा नाम अन्ना है, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। आज मेरी तकरीर का उन्वान है वालिदैन से दोस्ती। वालिदैन और औलाद के हुकूक की बात हर कोई करता है जो कि बहुत अहम मामला है, लेकिन मैं आज यहाँ
والدین سے دوستی کے تعلق کی بات کروں گی۔ والدین ہماری زندگیوں کا سب سے اہم حصہ ہے۔ صرف میرے ہی نہیں، ہم سب کے والدین بہترین انسان، بہترین استاد اور سب سے بڑے کفیل ہیں۔ اور یہاں بیٹھے تمام لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، ہمارے والدین جیسا کوئی بھی پوری دنیا میں ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہمیں ہمارے والدین جیسا دوست بھی ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے اور برے حالات میں سہارا دے، آپ کو ہمت دے آگے بڑھنے کی۔ جب آپ غمگین ہو تو اس غم سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ آپ ایک بہترین اور کامیاب انسان بن سکیں۔ تو ناظرین گرامی، وہ بہترین دوست ہمارے والدین کیوں نہیں ہو سکتے؟ میرے والدین سے میرا تعلق بہت خوبصورت ہے۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ مجھے اسکول میں تقریر کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس تقریر کے دوران مجھے اعتماد ہونے کی ضرورت تھی، لیکن آخری لمحے میں گھبرا گئی اور اسی لمحے میرے والدین وہاں آ پہنچے اور میں ان کو دیکھتے ہی اعتماد ہو گئی۔ میرے سب سے اچھے دوست میرے والدین ہی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گی، والدین سلامت ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے اس بادشاہی کو، آمین۔ شکریہ۔ تھینک یو مرحبا۔ اچھا بھائی، ہم سب بچوں کی بات سے تو ایگری کر رہے ہیں، والدین دوست ہونے چاہیے، استاد ایسے ہونے چاہیے، وداؤٹ ٹیچرز دا لائف از ٹو ڈارک۔ لیکن میں تو آپ لوگوں سے خوش ہوں بالکل بھی۔ یہ سب آپ کے دوست نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ تو پھر جب وہ اسٹیج پر آ رہے ہیں یا ڈائس پر آ رہے ہیں تو آپ کو ان کے لیے کوئی تالیاں ہی نہیں بجا رہے، ان کو چیئر اپ کون کرے گا؟ پھر آپ آئیں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا آپ کو بھی۔ خود کے لیے تالیاں بجانی چاہیے تاکہ ہمیں کانفیڈنس آئے، ہمیں یہاں تک آنے کا موقع ملا۔ پتہ ہے یہاں کھڑے ہو کے ہوسٹنگ کرنے سے بھی ہم اتنے بڑے ہو کے بھی گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور آپ اتنے چھوٹے چھوٹے ہو کر ہمیں اتنے اچھے اچھے میسیجز دے رہے ہیں اور اپنے لیے تالیاں بجاتے ہوئے گھبرا رہے ہو۔ You all are future stars. آپ لوگ اچھے سے initiate کرو گے تو اچھے آگے کرو گے۔ Yes. اپنے لیے تالی بجاؤ، خود کے لیے تالی بجاؤ اور اسٹیج پر آؤ۔ Got my point? Okay. Now the next is رانی مظفر۔ چلیے اس کے لیے تالیاں کون بجائے گا؟ Good afternoon, everyone. Respected judges, noble guests, and my dear friends. Assalamu alaikum. My name is Rani Muzaffar, and I am a student of class 2EG at SNH Ahmad School. Today, I am here to talk about something we all love, and it is technology.
heartfelt thanks to us. Welcome that you have are thankful to Pakistan Solution that they have given you the platform to talk. And we are thankful to you that we are getting such a beautiful future star from the school, from Aga Khan School. Thank you so much. Now Sayyida Hafsa Abdullah. Please give her a huge round of applause. Assalamualaikum, dear students and teachers. My name is Sayyida Hafsa Abdullah and I am from class 2EF. Today, my topic is about friendship with parents. Have you ever stopped to think about how lucky we are to have someone in our lives who is there for us, cares for us, helps us, and stands by us no matter what? Now, what if I told you that the person who could be your biggest supporter and your best friend is already right there in your life? That person is your parent. Parents are always seen as the ones who take care of us and provide for us, but they are also important as friends. Parents can be the best friends because they understand us and love and guide us. Parents give their children love that never stops. Unlike any other friendship, a parent's love is always there, strong and steady, no matter what mistakes we make or what tough times they go through. Parents, this kind of love helps create a safe place where we can feel comfortable and be ourselves and have the confidence to face the world. It's like having a shield of love that protects and lifts you up. Parents, Parents also help guide us through life when things get tricky. Their advice is always meant to do the best. This guidance helps make smarter choices and avoid problems. It's kind of having a map that shows us the right path to take. Parents understand us in a way that nobody else can. What makes us happy, what makes us sad, what makes us angry, all are big feelings. And all are big feelings. This special bond what makes parents the best friends. They shape us into who we are meant to be and guide us to every challenge. No matter where life takes us, we'll always have our parents to turn to for love, wisdom, and support. No matter how old we get, their friendship will be one of the greatest gifts we'll ever have. Always ready to catch us when we fall and cheer for us as we rise. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमल वकास में जमात 4 SMS आहान प्राइमरी स्टेशन की तालिबा हूँ। कौन कौन इस मुल्क के हालात से बेजार है? जरा वो लोग हाथ उठाएं जो किसी न किसी तरह दूसरे मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुझे आपकी जिंदगी के कीमती 3 मिनट चाहिए ताकि मैं आपका नजरिया बदल सकूं। घर के मुकाबले में दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। इसी तरह पायदार और मुस्बत सोच बड़े से बड़े मसाइल हल कर सकती है। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साथी। इस मिसरे से आपने ये अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज का मेरा मौजू क्या है। जी हाँ, मुस्बत पाकिस्तान। ख़वातीन व हज़रात, आज हमें अपने वतन पाकिस्तान की अज़मत को याद करने की ज़रूरत है। ये ज़मीन, ये लोग और ये तारीख सब कुछ हमें याद दिलाते हैं कि हम में इतनी ताकत है कि हम दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी कौम तभी अजीम बन सकती है जब उसके अफराद अपने मकसद की तरफ पुख्ता अज़म और सच्ची
ایمانداری اور صبر کی بنیاد پر ملتی ہے۔ ہمارے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے اور ہر مشکل کو حوصلے اور عزم سے شکست دی ہے۔ آج بھی پاکستان میں ہر شعبے میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو محنت کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، جیسے احمد سائے جیسے پرعزم استاد جنہوں نے بہت سے بچوں کا مستقبل سنوارا، یا کھیلوں میں ارشد ندیم جیسے باکمال کھلاڑی جنہوں نے بغیر کسی سہولیات کے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ ان تمام کامیابیوں کی بنیاد صرف ایک چیز پر ہے، عزم۔ صدر عالی وقار، میں آپ کو میرے ساتھ پیش آیا ایک واقعہ سنانا چاہوں گی۔ کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کہ میں اپنے اسکول کے قریب ایک کچرے کے ڈھیر کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے پہل لوگ میرا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے یہ کام کرنے سے کیا ہوگا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جگہ صاف کی۔ آج وہی جگہ پورے علاقے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنی ہوئی ہے۔ زبان سے کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ کومل نے جو کہا وہ بالکل صحیح تھا کہ اگر ہم اپنا ایک عزم بنا لیں یا اپنے لیے کسی چیز کو کرنے کا فیصلہ کر لیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے عزم بنا لیا کہ ہمیں اسپیچ دینی ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو اب ہم بھی آپ کو روک نہیں سکتے کہ آپ آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں۔ تو اب میں بلاتی ہوں مریم فاطمہ کو کہ وہ آئیں اور ہماری اور اچھے اچھے لفظوں کے ساتھ اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ رہنمائی کریں۔ Assalamu alaikum and good afternoon to my dear friends. My name is Maryam Fatma and I am the student of grade 4EB. Today I am going to be representing a speech based on the topic Kids and Technology. The world has changed. Technology has evolved. But have we guided our kids to embrace technology the right way? In this world of digital era, kids are born with mobiles and tablets as pacifiers. To every corner, I see a kid hypnotized to screens, be it mobile, tablet, television, etc., etc. Every eyeball is lost in the process of wondering what just happened. Scenes and colors changing every second, overstimulating tiny brains, affecting their emotions and behavior. We cannot neglect the point that technology is the future. We cannot handicap our generation by closing the outlet toward technology. But just as every medicine is good in right dose and right route, we have to use the right dose and right route of technology for our kids. You have to use it to learn it. In today's fast-paced world, digital technology is not luxury but a necessity. It opens a world to endless opportunities for learning, creativity, and development. By introducing kids to digital tools early, we are equipping them with skills essential for the modern world. We all have observed the quarantine days of COVID-19 pandemic. It was technology which helped us kids in our learning by attending online classes. But parents giving screens while doing house chore or office work is not the right way to give technology exposure. To me, it's technology abuse. Yes, you heard it right, technology abuse. Kids mesmerized by digital world want to explore, but this adventure can lead them to a path you don't want them to travel. Parents are their travel guide who have to use the path and type of exposure. So the question lies in front of us. What's the better way to give technology exposure and to introduce kids to technology? First of all, we should develop digital literacy, encourage them learning digital language like Python and coding, the same way we encourage them in learning linguistics. Introduce them to games which improve problem-solving skills and are balanced with fun and knowledge. Guide them about digital resources to gain desired
parental controls or filters. Educate about online safety. And most important is to try to use technology together. When parents engage with their children during screen time, they create a shared experience that fosters communication, understanding, and bonding. I want to conclude with this message to kids. You have the power to make yourself smart. Let's use technology to grow and for learning, not for just passing the time. Stay safe, stay aware, and keep learning. Thank you. अच्छा भाई, मैंने तो यहाँ बहुत कुछ सुना टेक्नोलॉजी के बारे में. क्या आप लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते कोई भी? हाँ, बहुत जोश खरोश से मोबाइल से इस्तेमाल करने से तो हमें रोका जा रहा है, मत यूज़ करो. हर कोई हिप्नोटाइज हुआ हुआ है मोबाइल की वजह से, स्क्रीन टाइमिंग ये वो. आप लोग नहीं यूज़ करते? सच सच बताइएगा, बिल्कुल सच. बी ट्रू. बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते? नो. The one hand is shaking like this, the one is saying like this, then what is the truth? करते हैं ना, सब यूज करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं. हम रह ही नहीं सकते ना, बिकॉज उसने हमें कैप्चर किया है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना. लेकिन हम जो यहाँ सुन के जा रहे हैं कि स्क्रीन टाइम का कम से कम यूज करना है, उससे हमें ऑब्वियसली हम इस बात को समझना है और इससे फ़ायदा उठाना है. हमें इसको यूटिलाइज करना है घर जाने के बाद, इन पॉइंट्स को समझते हुए कि वाकई हमें उसका पॉजिटिव यूज़ करना है और कम से कम करना है, ठीक है ना. आज से पहले अगर मोबाइल नहीं था तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हमारी किताबें थी और हमारी फैमिली थी. ऐसा ही है. तो दोबारा अगर हम किताबों से दोस्ती कर ली जाए और फैमिली से दोस्ती कर ली जाए तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है ना. मोबाइल से ज़्यादा अच्छे दोस्त आपकी बुक्स हैं, बिकॉज दे गिव यू गुड एंड वास्ट नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, राइट. एंड द पेरेंट्स एंड योर टीचर्स आर योर गुड गाइडर्स. वो आपकी अच्छी रहनुमाई करते हैं, ठीक है. चलिए हम नेक्स्ट कैटेगरी नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाते हैं, दैट इज हफ्सा काशिफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम हज़रात, अजीज असातिज़ा और मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम हफ्सा काशिफ है और मैं जमात पंचम की तालिबा हूँ. आज मैं जिस मौजू पर आपको शायद करने जा रही हूँ उसका नाम है पाकिस्तान का मतलब क्या. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के. सदर आले वकार, मैं अपने इस तकरीर का आगाज अपनी जिंदगी के एक वाक़ये से करना चाहूँगी. चंद दिन पहले की बात है, मैं अपनी दोस्त के साथ एक पार्क में गई. वहाँ मैंने एक बुजुर्ग को देखा. वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे. मैं थोड़ी से आगे गई तो वो कह रहे थे, बेटा मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है. बच्चों, हमें ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली. हमने अपने प्यारों को खोया, भूख और प्यास देखी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी. ये मुल्क अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है. इसकी कदर करो, इसे साफ रखो और मेहनत करो ताकि हमेशा सलामत रहे. सदर आली वकार, पाकिस्तान का मतलब सिर्फ एक मुल्क या सरजमीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मतलब वो सरजमीन है जहाँ मुसलमानों को आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का हक हासिल हो. ये वो ख्वाब था जो इकबाल ने देखा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे हकीकत बनाया. सदर आली वकार, पाकिस्तान का मतलब एक आज़ाद रियासत है जहाँ मुसलमान अपने मजहब, सकाफत और तारीख को इज्जत दें और एक ऐसे माशरे की तामीर करें जो इंसाफ और भाईचारे पर मबनी हो. सदर आली वकार, लेकिन अफसोस हमने पाकिस्तान के असल मकसद को भुला दिया. हमने भुला दिया कि पाकिस्तान का कयाम एक नजरिए की बुनियाद पर हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह. इसका मकसद सिर्फ एक जियोग्राफियाई आज़ादी नहीं था, बल्कि ये एक रूहानी, मजहबी और सकाफती आज़ादी का पैगाम था. हमने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को एक नई सिम देने के लिए कई जद्दोजहद की. सदर आली वकार, आज अगर हम अपने माशरती, इखलाकी और कौमी रवैयों पर नजर डालें तो हमें एहसास होता है कि हमने पाकिस्तान के असल मकसद के साथ दूरी इख्तियार कर ली है. हमने इसके नजरिए को फरामोश कर दिया है. प्यारे दोस्तों, आज हमें फिर पाकिस्तान के
ہوگا اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کا مقصد صرف ایک ملک بنانا نہیں تھا بلکہ ایک معاشرہ قائم کرنا تھا جو اسلام اور انصاف کے اصولوں پر قائم ہو۔ میں اپنے اس تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ اے قائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، اے قائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا۔ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شکریہ۔ بالکل صحیح کہا حفصہ نے ہم سے کہ ہم واقعی اپنے اس ملک کو سنبھال نہیں سکے۔ جو قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے بڑے بڑے رہنما ہمیں ذمہ داری دے کر گئے تھے، ہم اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا اور دیر نہیں ہوئی ہے۔ Now I would like to call Sayyida Manahil Furqan to come and say a few words. Assalamu alaikum everyone. My name is Manahil and I'm from class 5EC. Today I'm here to present a speech. نخرے تو بس ماں باپ ہی اٹھایا کرتے ہیں، نخرے تو بس ماں باپ ہی اٹھایا کرتے ہیں، دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ السلام علیکم respected judges, teachers and my dear fellows. Today I stand before you to talk about a relationship that is often overlooked, yet is one of the most important ones we can cultivate in our lives. Friendship with our parents. As children, sometimes we take our parents for granted. We assume that they will be there for us, supporting for us, providing us, and love unconditionally. But as we grow older, we realize that our parents are not just caregivers, but also individuals with their own dreams, aspirations, and struggles. I remember an incident when I was in grade 2. I had failed a math test. I was devastated. My parents were also disappointed. But instead of scolding me, they sat down and talked about their own struggles in school. My mom shared how she had to work multiple jobs to support her family while pursuing her education. My dad talked about how he had to repeat a year in college due to financial difficulties. In that moment, I realized that my parents are not just caregivers, authority figures, but human beings who had faced their own challenges and overcome them. That conversation changed our relationship forever. We began to connect on a deeper level, sharing our fears, thoughts, feelings, and dreams with each other. So, how can we cultivate a stronger, meaningful friendship with our parents? I want to share a few tips. Take an interest in their lives, their hobbies, and their passions. Share your thoughts, feelings, and your dreams with your parents. Express your gratitude for your parents' love, support, and sacrifices. In the end, I must say that friendship with our parents is a precious gift that we should cherish, nurture, and cultivate. Let's show them that we value, respect, and appreciate them. Thank you.